last class, we did talk about different kind of atomic transitions. We said that there are possible transitions which are absorption. The second one is the spontaneous emission. And the third is stimulated emission. Our main focus is on the stimulated emission because stimulated emission is the emission which happens in the case of laser. लेजर में आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है. स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए यू नीड टू हैव पॉपुलेशन इन्वर्शन. In thermal equilibrium, most of the atoms are going to be in the lower state, but if you can somehow manage to excite atoms to the higher lying level in such a way that the number of atoms in the higher lying level is higher as compared to number of atoms in the lower lying level. This lower lying level could be a ground state or it could be a lower excited state also. That particular situation is called as population inversion. It's simply having larger number of atoms in the higher level as compared to the lower level, which is usually against the naturally occurring process. Naturally, you will have most of the atoms in the lower lying state. So we need to have the population inversion. So we would like to have a stimulated emission, but for stimulated emission, I'm repeating that again, we would also like to have population inversion. So our main aim is going to achieve the population inversion in any collection of atoms, ions, molecules, whether it is in the form of a solid, whether it is in the form of a gas, or whether it is in the form of liquid. We need to have some collection of, it could be atoms, it could be ions, it could be molecules also. You have lasers which are based on molecules such as carbon dioxide laser. You have laser based on gas such as helium neon laser that we are going to talk about. And you have laser in the form of solid material also, which is going to be your UV laser. So it could be anything. It doesn't have to be one particular kind of material. It could be either solid, it could be gaseous, or it could be in the liquid also. It could be collection of atoms, it could be collection of molecules, or it could be collection of gaseous atoms also. It could be anything. Our main aim is but to achieve the population inversion in that particular collection of atoms or molecules. So for any general laser, if you want to talk about the requirement or the main component of laser, then there are three main components. The first one is active medium. It is the medium in which you want to achieve the population inversion. पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए आपको एक मीडियम चाहिए है जिस मीडियम में आपके पास में एटम्स मॉलिक्यूल्स या गैस होंगे. सो इट इज बेसिकली योर कलेक्शन ऑफ एटम्स, इट्स मॉलिक्यूल्स और आयंस which could be either in the gaseous form, could be in liquid form, or it could be in solid form. And in this active medium, you should be able to achieve the population inversion. For example, in the case of ruby laser, we'll see that ruby crystal is basically your active medium. This is where you want to have the population inversion. Population inversion के लिए आपको कुछ ना कुछ तो material चाहिए है जहाँ पे आपके atoms से molecules होंगे. That particular material is basically your active medium. In thermal equilibrium, in active medium, most of the atoms are going to lie in the lower lying states. You need to have some mechanism to force the atoms in the higher excited state in such a way that a state of population inversion can be achieved. So that means you need something to pump the atoms from the lower state to the higher state. तभी आपका population inversion achieve होगा. And that basically pump
is called as your pumping source. Sorry, it's source. You need this to achieve population inversion. हमने कहा हमारे पास एक कलेक्शन होना चाहिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स या गैस का, जो कि बेसिकली आपका एक्टिव मीडियम हो गया. अब नेचुरली इसमें मोस्ट ऑफ द एटम्स आर गोइंग टू लाई इन द ग्राउंड स्टेट. You need some mechanism to pump these atoms from the ground state to the higher state. And this is basically your pumping source. It could be a flashlight. It could be an electric discharge. It could be anything which basically generates photon in such a way that those photons are absorbed and atoms are excited from lower state to the higher state, so that you can achieve a population inversion in that particular material. The third main component is going to be optical resonators. In the previous class, remember I said that if you have stimulated emission, which means you are already having the population inversion, you have an incident photon. This photon will force one of the atom to come from higher state to the lower state. ये photon आपका as it is आ गया वापस, and यहाँ पे आपका एक atom excited state से lower state में आया है, उसकी वजह से भी आपका एक photon emit होगा. तो अब आपके पास में 2 photons हो गए. And then if you remember, I said if you can put the mirrors here and reflect back these photons, then you can make these photons to oscillate here and there. Actually, the interesting thing is that initially laser was supposed to be called as loser, because you are actually making light oscillate between 2 mirrors, and then its full form had been light oscillation by stimulated emission of radiation rather than light amplification. But the reason this name was dropped, because no one was going to fund something with an acronym loser. So that is why people, rather than using the term oscillation, they started using the term amplification. So you are actually making light oscillate in one direction, then you are reflecting it, and then you are bringing it back, so that your amplification of light happens. So optical resonators could be simply your pair of mirrors, which are basically used for the oscillation and amplification of light. So these are the 3 main components in any laser, whether it's a solid state laser, whether it's a gas laser, or whether it's a, I don't know, liquid laser. Or in the case of gas laser, for example, it could be helium neon laser, or it could be a carbon dioxide laser. You always need to have these 3 main components in the lasing system. So now we are going to talk about ruby laser, and I'll specify in each of the laser that we are going to talk about what is the active medium, what is the pumping source, and what is the optical resonators in that particular laser. It would vary from system to system, or the laser that you are talking about. So the first laser is the ruby laser that we are going to talk about. And this was also first functional laser also, discovered by T. Myman in 1960. If you talk about construction of this ruby laser, you have a ruby rod. आपके पास में एक ruby rod होती है. Ruby rod is nothing but it is an aluminum oxide crystal. And in this crystal, some of the aluminum ions are replaced by chromium ions. And these chromium ions are responsible for the red color in ruby. Ruby की बड़े सारे लोग ज्वेलरी भी पहनते हैं, right? And that is red in color, which is basically due to this chromium ions.
In the case of ruby laser, we are talking about replacing some of the aluminum ion by chromium ions. How much or how many of the aluminum ions we should replace by the chromium ions? People have tried different combination, but they have found out that if you use 0.05% by weight, that gives you best lasing action. So those many aluminum ions are going to be replaced by chromium ions. Your lasing action is going to happen in chromium ions. Aluminum oxide crystal is simply used to suspend chromium ions. That is the only function of aluminum oxide. उसका lasers में कोई role नहीं है उसके अलावा. It is simply used as a medium to suspend the chromium ions. And that is why aluminum oxide is called as host crystal, because it is used for hosting of chromium ions. So this ruby rod basically acts as your active medium in the case of ruby laser. So your ruby rod is going to be your active medium. One end of this ruby rod is partially silvered, the other end is completely silvered. एक एंड को आप पार्शियली सिल्वर इसलिए करते हो क्योंकि आपको लेजर को फाइनली एक्सट्रैक्ट भी करना है. अगर दोनों की दोनों फुली रिफ्लेक्टिंग होंगे तो आपकी सिर्फ लाइट ऑसिलेट करती रहेगी. You need to get the laser out also, let the light get out also, right? So one of the end is going to be your partially reflecting. It could be any of the end. The second one is going to be fully reflecting. And these polished ends, these flat polished ends, they basically act as your optical resonators. The flat polished ends of the ruby rod. This whole setup is kept in a glass tube. ये पूरा का पूरा जो आपका सेटअप है ये ग्लास ट्यूब में प्लेस कर दिया जाता है. We have talked about the active medium. We have talked about the optical resonator also. We haven't talked about the pumping source. In the case of ruby laser, a xenon flash lamp is used as a pumping source. Xenon flash lamp काम करेगा कि आपके क्रोमियम के जो आयंस हैं, I'm repeating that your lasing action happens between the levels of chromium. Aluminum oxide is simply a host crystal which is used to suspend the chromium ions into it. So xenon flash lamp, which acts as a pumping source, it is going to excite the chromium ions from the ground state to the higher excited state. So इसके चारों तरफ you place around a xenon flash lamp. And as the name suggests, it is a flash lamp. That means light is going to be on for some amount of time. It is going to be off for certain amount of time. आप पंप जो चूज करते हो वो इस वे में चूज करते हो कि वो जिस लाइट की एमिट, जिस फोटोन, जिस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा वो आपके एक्टिव मीडियम के लेवल के साथ में मैच करनी चाहिए. ऐसा ना हो कि ये आपकी कम एनर्जी की लाइट एमिट करे और यहाँ पे आपके जो एक्टिव मीडियम के एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो तो आप एक्साइट कर ही नहीं पाओ. That is the criteria usually used for choosing the pumping source. So you have this xenon flash lamp which basically acts as your pumping source. So this is the construction of ruby laser. Now if you talk about how does the laser action happens in the ruby laser, we need to talk about the levels of the chromium, because as I keep on saying time and again, in the case of ruby laser, your lasing action happens in the chromium ions.
So what happens in the chromium ions? If we talk about the working of this ruby laser, if you draw the level scheme of chromium ion, you have the ground state, you have the excited levels, two excited levels. This being a solid, and I think you might be aware, in the case of solids, you usually have the bands, right? आपके जो levels होते हैं वो थोड़े से they are not very well defined. वहाँ पे आपके bands बनने start हो जाते हैं. So it has two excited levels. One is, let's say, E1. The second one is E2. There is a third level here, and this level is a metastable level. I'll tell you what is a metastable level. Yesterday we said that most of the excited states in the case of atoms usually have a lifetime of 10 raised to power minus 8 seconds also. So both of these has a lifetime of 10 raised to power minus 8 seconds. But there are certain states in the excited spectrum that which has a slightly longer lifetime, and those particular states are called as metastable states. And what do I mean by slightly longer lifetime? That means lifetime which are greater than 10 raised to power minus 3 seconds or so. Here, look at the lifetime. I'm saying these lifetimes are of the order of 10 raised to power minus 8 seconds. I'm saying metastable states are the excited states which has a lifetime which is much longer as compared to the regular lifetime of the excited states. And how much is that much longer? It is usually greater than 10 raised to power minus 3 seconds. Those particular states are called as metastable states. Here, this metastable state has a lifetime of 3 milliseconds. Now, when you switch on the xenon flash lamp, it is going to emit the photons. वो जो photons हैं, they will be absorbed and your chromium ions will be excited to these states here. This corresponds to a wavelength around 4000 angstrom. This state corresponds to a wavelength around 6600 angstrom. So when you switch on the xenon flash lamp, these wavelengths will be produced, and these wavelengths will be absorbed by the chromium ions, and your chromium is going to be excited from the ground state to the excited states here. Now these excited states are going to have this much lifetime. After this much lifetime, they come to the lower state, which is this state here, and which is a metastable state. Now these transitions, when they come from E1 and E2, these are non-radiative transitions. As the name suggests, non-radiative means no radiation. That means in these transitions, a photon is not emitted. अगर photon नहीं emit होगा, तो वो energy कहाँ पे गई? वो energy जो है, वो crystal में absorb हो जाएगी आपकी. आप जो रूबी की रोड आप यूज कर रहे हो, उसके जो एटम्स है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप रेडिएशन तो एमिट कर नहीं रहे हो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू दिस लोअर स्टेट. So your energy is dissipated in the ruby rod itself, and that is why you need to cool ruby rod. Eventually it will start heating up, क्योंकि आप energy जो है वो उसमें continuously dump किए जा रहे हो. तो रूबी रोड हीट अप होना स्टार्ट कर देगी, आपको उसमें वाटर सर्कुलेट करना पड़ता है टू कूल इट ऑफ, टू कैरी ऑफ द हीट व्हिच इज ड्यू टू दीज ट्रांजिशंस हियर. नाउ व्हाट वुड हैपन टू द दिस स्टेट? यहाँ पे अगर एक एटम आ जाता है तो ऑन एन एवरेज दैट एटम इज गोइंग टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? यहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड है. सो दिस इज बेसिकली लाइक अ वाटर टैंक.
एक वाटर टैंक आप अज्यूम करो, उस वाटर टैंक में आपका जो इनलेट है वो ज्यादा है और जो आउटलेट है वो कम है. Let me repeat that. This metastable level you can compare it to a water tank जिसमें आपका इनलेट कहीं ज्यादा है as compared to outlet. तो क्या होगा आपका वाटर टैंक में पानी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड द सेम थिंग हैपन्स हियर. यहाँ पे जो फोटोन आ रहे हैं दे आर कमिंग एट much faster rate as compared to them going down here. The reason being that क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन आप यहाँ पे जो आप एटम्स एक्साइट कर रहे हो उनकी जो लाइफ टाइम है वो -8 सेकेंड है. तो यहाँ से तो फटाक से डिके करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, बट यहाँ पे उनकी लाइफ टाइम मच लॉन्गर है. So they are going to be stuck here for quite some time. And that is when you start achieving population inversion. यहाँ पे आपके एटम्स के नंबर बिल्ड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इवेंचुअली अ स्टेट विल कम व्हेन यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एट दिस पर्टिकुलर लेवल. So now what would happen? Even if one atom undergoes spontaneous emission, अगर एक भी एटम यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है तो वो एक फोटोन एमिट करेगा. आपने रूबी रोड के दोनों तरफ पॉलिश्ड मिरर लगाए हैं या आपके पास में यहाँ पे फुली रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं. सो व्हाट वुड हैपन? ये फोटोन आपका रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, दो एटम एक आपके यहाँ पे दो फोटोन इवेंचुअली एमिट होंगे, एक ओरिजिनल फोटोन और एक एटम को ये फोर्स करेगा लोअर स्टेट में आने के लिए. इस साइड में आपने फिर से पॉलिशिंग की हुई है, ये दोनों फोटोन फिर से रिफ्लेक्ट होंगे एंड इवेंचुअली आपका इंटेंसिटी जो है फोटोन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी एंड फाइनली फिर आपका जो 95% या 99% रादर मैनी टाइम्स होता है वो यूजुअली मोर देन 99% होता है, वो आपका फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. और जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है दैट इज समवेयर 50 to 95%. तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड से यू कैन गेट द कोहेरेंट इंटेंस लेजर लाइट. यहाँ से ये जो आपकी लाइट एमिट होती है इस स्टेट से इस स्टेट में जो होगा तो जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ इज 6943 एंगस्ट्रम. एंड दैट इज व्हाई रूबी लेजर से जो लाइट एमिट होती है दैट इज आल्सो रेड इन कलर. वो आपके रेड कलर की लाइट होती है. दिस इज द वर्किंग ऑफ रूबी लेजर. किसी को इसमें कोई डाउट है? हाउ डज दिस? हाँ जी बच्चे. मैम लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो दोबारा, जब फोटॉन्स इमिट हुए थे. ओके, सो इन द लास्ट स्टेप आई सेड कि यहाँ पे आपने बहुत सारे एटम्स हैं वो पॉपुलेट कर दिए हैं. अब आपने यहाँ पे जब बहुत सारे एटम्स इस पर्टिकुलर स्टेट में आ गए हैं, अगर एक भी एटम स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक फोटोन एमिट करेगा. आपने दोनों तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लगाए हुए हैं, ये फोटोन आपका रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. अब जब ये फोटोन रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा दिस टाइम स्टिमुलेटेड एमिशन इज गोइंग टू हैपन. तो ये फोटोन तो एज इट इज आएगा ही आएगा. एक एटम को ये फोर्स करेगा कि वो मेटास्टेबल स्टेट से लोअर स्टेट में आए एंड उसकी वजह से आपका एक और फोटोन एमिट हो जाएगा. सो आपके पास में यहाँ पे 2 फोटोन आ जाएंगे. ये आपकी फिर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दोनों के दोनों फोटोन लेट्स से रिफ्लेक्ट हो गए. अब ये दो फोटोन दो एटम्स को फोर्स करेंगे कि वो मेटास्टेबल स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाएं. तो ये दो फोटोन आपके एज इट इज आ जाएंगे, दो और फोटोन आएंगे क्योंकि दो एटम्स को आपने मेटास्टेबल स्टेट से लोअर स्टेट में ले आए हैं. तो अब आपके पास में 4 फोटोन्स हो जाएंगे. फिर आप 4 फोटोन्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे एंड सो ऑन. इवेंचुअली आपकी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बिल्डअप होती चली जाएगी क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उतनी आपकी इंटेंसिटी लार्ज होगी.
और ये जो वेवलेंथ एमिट होती है ये आपकी 6943 एंगस्ट्रम की होती है। दैट इज व्हाई आपकी जो लेजर लाइट एमिट होती है रूबी से वो रेड कलर की होती है। पता चला आपको? यस मैम, थैंक यू। ओके। ओके, नाउ रूबी लेजर, एक तो आप जिनोन फ्लैश लैंप यूज कर रहे हैं, राइट? तो दैट मीन्स आपके पास में लाइट का एक फ्लैश आएगा, फिर फ्लैश नहीं आएगा, फिर फ्लैश आएगा, फिर फ्लैश नहीं आएगा। सो दैट मीन्स आपकी जो आउटपुट होगी वो पल्स्ड आउटपुट होगी, राइट? जब लाइट आएगी तो आपके पास में आउटपुट होएगी, लाइट नहीं आएगी तो फिर आप एक्साइट ही नहीं कर रहे एटम्स को, तो आपके पास में लाइट की जो आउटपुट है वो नहीं आएगी। बट इवन ड्यूरिंग द टाइम जब आपका फ्लैश लैंप ऑन होता है, अगर आप यहाँ पे इंटेंसिटी या उसकी पावर आउटपुट प्लॉट करो तो आपकी जो पावर आउटपुट रूबी लेजर की आती है इसमें स्पाइकिंग होती है। फिर क्या होगा, आपका फ्लैश लैंप ऑफ हो गया, डाई आउट हो गई, नेक्स्ट फ्लैश आया, फिर से स्पाइकिंग होगी, फिर से डाई आउट होगी, फिर नेक्स्ट फ्लैश आएगा, फिर से आपकी होगी। And this particular phenomena is called as spiking in ruby laser. इसको स्पाइकिंग बोलते हैं रूबी लेजर में। Why does this spiking happens? Let us talk about that. जैसे ही आप यहाँ पे इनिशियली फ्लैश लैंप ऑन करते हो, let me erase this stuff again. I need to focus on these levels again. And this was your ground. So suppose आपने फ्लैश लैंप ऑन किया इनिशियली, राइट? आपने फ्लैश लैंप ऑन किया, स्टिमुलेटेड एमिशन तो हो नहीं रहा है, राइट? तो आप सिंपली जो है वो पंप कर रहे हो एटम्स को, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांजिशन है वो अभी नहीं हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है। सो व्हाट वुड हैपन, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एटम्स को ऊपर पॉपुलेट करते चले जाओगे, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन जो है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, वो बहुत फास्टली बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि आप डिप्लीट तो करा नहीं रहे हो, आप सिंपली बस यहाँ पे इनिशियली पॉपुलेट कर रहे हो। सो व्हाट वुड हैपन, यहाँ से आपकी इंटेंसिटी है वो बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है इतने सारे आपने नंबर ऑफ एटम्स पॉपुलेट कर दिए हैं विच इज लार्जर देन steady state population. या larger than threshold inversion. Threshold inversion means कि up to a point आप यहाँ पे number of atoms exceed कर सकते हो। अगर आप उस पॉइंट से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स एक्सीड कर दोगे, सो रिमेंबर वी सेड दैट अगर आपकी ट्रांजिशन की रेट होगी फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ एटम्स इन 2, which is metastable state here. So if you continuously keep on increasing the number of atoms here and you just reach beyond the threshold limit which could be populated in this level, what would happen, suddenly all the atoms would jump to the ground state. फिर क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इनिशियली जो बिल्ड हुई थी, इट विल स्टार्ट टू गो डाउन। अब अगर ये डाउन हो जाएगी इंटेंसिटी, दैट मीन्स अब आपका यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होना बंद हो गया है। फिर से स्टिमुलेटेड एमिशन होना अगर आपका बंद हो गया है, फिर से आपका फ्लैश लैंप की लाइट की वजह से फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, दोस फोटोन्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस ग्राउंड स्टेट एंड फिर से आपके एटम्स यहाँ पे एक्साइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। And this cycle keeps on repeating continuously, and that is why you get a spiked output in the case of ruby laser. आपके रूबी लेजर में स्पाइक्ड आउटपुट मिलती है, क्योंकि ये जो फोटोन्स आप पॉपुलेट कर रहे हो ये आप कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आप फ्लैश लैंप ऑन करोगे, immediately you will start pumping at a very fast level atoms from ground state to the excited state.
and initially because there was no stimulated emission happening, so यहाँ पे आपके number of atoms हैं, they are going to exceed the threshold limit, and because of which all the atoms will suddenly come to the lower state here, and that would lead to a spiked output in the case of ruby laser. And this is a characteristic of ruby laser, that you are going to get a spiked output in this case. So this was all about the ruby laser. Now I'm going to talk about helium neon laser. Ma'am, which one was the like one you said is a non-radiative transition? Which one is a radiative transition in ये ruby आपका laser? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, ये आपका रेडिएटिव ट्रांजिशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा यहाँ पे आप एक फोटोन एमिट करोगे जिसकी की लाइट वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रम होगी, और यही आपका लेजर लेवल होगा. Okay, ma'am. हाँ जी. Ma'am, and what is the reason for using flash lamp? Like if we use continuous lamp? क्योंकि आपके जिनोन यहाँ पे मैंने कहा कि आपको इस वेवलेंथ चाहिए है क्रोमियम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए. जिनोन जिस वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है वो इससे मैच करती है, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग जिनोन फ्लैश लैम्प. Okay, ma'am. So the next laser that we are going to talk about is a helium neon laser. And one important thing, many times rather than asking the ruby laser, we simply ask explain a 3-level laser. So ruby laser is a solid state laser and it is a 3-level laser. I'll tell you why it is a 3-level laser, because 3 levels are involved in one emission here. एक आपका ग्राउंड स्टेट मस्ट है, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेट आप पॉपुलेट कर सकते हो, चाहे आप ये वाली स्टेट पॉपुलेट कर दो. लेट्स से आपने ये वाली स्टेट पॉपुलेट की एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. एक आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई, एक आपकी ये स्टेट हो गई, एंड एक आपकी मेटास्टेबल स्टेट हो गई. In the second scenario, let's say that you populated ground state, you populated E2, you populated metastable. So 3 states are involved in this laser. That is why ruby laser is also called as a 3-level laser. The next laser that we are going to talk about, helium neon laser, this is a 4-level laser. And in the end, if I don't explain why it is a 4-level laser, just remind me to do so. If you talk about the construction of this helium neon laser, in this case, you use a mixture of helium and neon in ratio 10:1 by pressure. Gas hai. So in the tube, and let me draw first the tube here. In this tube, the pressure is maintained 1 torr. This combination of helium and neon acts basically as your active medium. Your lasing action, even though, look at the ratio of helium and neon. Helium, the ratio is 10:1, but the lasing action happens between neon atoms. हीलियम का एक पर्पस है, हीलियम नियोन के एक्साइटेड लेवल्स को सेलेक्टिवली पॉपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. I'll explain you while explaining the working of helium neon laser. But the only function of helium is to selectively populate it, to selectively populate the excited levels of neon. That is the only function of helium. उसके अलावा लेजर में हीलियम का कोई रोल नहीं है. लेजर आपका नियोन के लेवल्स में होगा. ये जो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लगाए हैं या मिरर्स जो लगाए हैं, these basically act as your optical resonators.
these mirrors. ये जो रोड मैंने लगाई है, they basically represent electric discharge. Which acts as your pumping source in helium neon laser. This is the construction of helium neon laser. Now, if we talk, and in this tube, this is a long narrow tube. The word narrow is important here. And again, in the working, I'll tell you why this tube has to be narrow. You fill helium and neon in this tube. I'm repeating that again. Your laser action is going to happen between the neon levels. Helium का laser में कोई role नहीं है. If you talk about working of this laser, let me draw the levels of helium and neon. Let's say this is the ground state of helium. This is F1 and this is F2 and this is F3. This is going to be F6 and equivalent to this is going to be F4. Its ground state is E4. Let me write this as E4. This is E1 and there is going to be an E2. And then there is going to be an E3 and there is going to be an E4. E4 is here and this is E5 then. Now, what is meant by electric discharge? Electric discharge means कि आपने उसमें suddenly electrons with certain kinetic energy pump कर दिए हैं, right? Electrons हैं वो अगर आप helium और neon के साथ compare करें तो helium is much lighter as compared to neon. जब आपके atoms आपके electrons collide करेंगे, helium being a lighter element, helium को वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेट कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू हैपन बाय कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स केम थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो आपने यहाँ पे दो रोड्स के थ्रू इसमें एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंप किया, which is basically putting electrons into the system and these electrons have a large kinetic energy. So उन kinetic energy के साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो आपने इंजेक्ट किए हैं वो इलेक्ट्रॉन एक हीलियम एटम के साथ में जो ग्राउंड स्टेट में है कोलाइड करेगा, हीलियम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एक एनर्जी गिव अप कर चुका है हीलियम को, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी. नाउ दीज लेवल्स ऑफ हीलियम, both of these levels of helium, they are basically metastable levels. So helium is going to stay into these levels for a large amount of time. Now what would happen? Helium के ये जो दो levels हमने draw किए हैं, F3 का जो level है उसकी एनर्जी कंपेरेबल है नियोन के इस level के. F2 का जो लेवल है उसकी एनर्जी नियोन के E4 के कंपेरेबल है. तो अगर आपका एक हीलियम जो है वो F3 स्टेट में है और वो एक नियोन के ग्राउंड स्टेट एटम के साथ में कोलाइड करता है, ग्राउंड स्टेट मींस इन स्टेट E1, E1 इज योर ग्राउंड स्टेट. सो व्हाट कुड हैपन, हीलियम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी नियोन को दे दे, हीलियम वापस आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाए और नियोन जो है वो हीलियम की F3 के कंपेरेबल जो एनर्जी लेवल है विच इज E6 वो आपका E6 में पहुंच जाए. सिमिलरली अनदर सिनेरियो कुड बी कि आपका हीलियम जो F2 स्टेट में है वो नियोन की ग्राउंड स्टेट के साथ में कोलाइड करे, एक नियोन के एटम के साथ में जो कि ग्राउंड स्टेट में है, और आपका जो हीलियम है वो अपनी एनर्जी गिव अप कर दे नियोन को, हीलियम अपना वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए और नियोन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए. किस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? जिसकी एनर्जी F2 के कंपेरेबल है. F2 के कंपेरेबल एनर्जी है वो E4 की है.
सो थ्रू एटॉमिक कोलिजन्स आप अपनी एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हो. Why we are doing this? Because now you have achieved a state of population inversion in these two levels. Not in these two levels. I mean to say that now you have the larger number of atoms in E6 and E4 as compared to E5 and E3. क्योंकि E5 और E3 में जो एक्साइटेशन होगी वो नियोन की ही होगी. नियोन के ग्राउंड स्टेट में से जो एक्साइटेड स्टेट में जा पाएंगे सिर्फ वही होंगे. E4 और E6 में आपका हीलियम जो है वो इन लेवल्स को सेलेक्टिवली पंप कर रहा है. So this is what I meant by in the previous slide when I said that helium का जो function है that is simply to selectively pump the excited state levels of neon, which are these two levels. आपने अब इन दो levels में larger number of atoms put कर दिए हैं as compared to E5 and E3. E6 में अगर आप अपने अब number of atoms बात करो, they are going to be larger than E5 number of atoms. और आपके नंबर ऑफ एटम्स E4 में आर गोइंग टू बी लार्जर देन नंबर ऑफ एटम्स E3. सो अब आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया है बिटवीन दिस लेवल एंड दिस लेवल, दिस लेवल एंड दिस लेवल आल्सो, एंड दिस लेवल एंड दिस लेवल आल्सो. क्योंकि आपके अब नंबर ऑफ एटम्स है वो E6 में दे विल आल्सो बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन E3. क्योंकि E3 में तो एटम सिर्फ यहां से यहां से आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो कुछ पॉपुलेशन होगी सिर्फ वो होगी. जबकि E4 और E6 में आपने हीलियम के थ्रू भी पॉपुलेट किए हैं एटम्स. सो यू हैव अ स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन E6 E5, E6 E3 एंड E4 E3. अगर आपने यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया है तो अब आप यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन करा सकते हो. यहाँ पे जो आता है वो आपका 3.39 माइक्रोमीटर का आता है. यहाँ से जो आपका वेवलेंथ एमिट होगी वो आपकी 6328 एंगस्ट्रम होगी और यहाँ पे जो आपकी होगी वो 1.15 माइक्रोमीटर होगी. ये दोनों हैं, ये विजिबल रेंज में नहीं है. सो लेट्स डिस्कार्ड द फर्दर डिस्कशन अबाउट दीज. सो दिस वन व्हिच फॉल्स इन द रेड लाइट रीजन अगेन. इन दो लेवल्स के बीच में आपने जो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की है, अब अगर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन होते हैं, आपने पीछे दो मिरर यहाँ पे लगाए हैं, फोटॉन्स आपके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑसिलेट करते रहेंगे, फर्दर स्टिमुलेटेड एमिशन होते रहेंगे एंड आपकी जो है लेजर लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी. यहाँ पे आपके जो एटम E3 में आएंगे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से E2 में जंप कर जाएंगे. E3 की जो लाइफ टाइम है वो अगेन आपकी 10⁻⁻8 सेकेंड है. E2 में जब आपके जो एटम्स आएंगे वो आपके E1 में चले जाएंगे. एंड यहाँ पे ये जो एटम्स हैं ये नीचे लाने के लिए आपने जो नैरो ट्यूब यूज की थी, रिमेंबर आई सेड द वर्ड लॉन्ग नैरो ट्यूब. तो जब आपके नियोन के एटम E2 में पहुंचेंगे तो वो ट्यूब के साथ में कोलाइड करेंगे एंड दे विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट हियर. फिर वो यहाँ पे आपके ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे. दिस हैपेंस थ्रू कोलिजन विद वॉल्स एंड दैट इज व्हाई उसकी वॉल्स को आप नैरो रखते हो. Another thing is this E2. Why we are bothered about bringing the atoms back from E2 to E3? क्योंकि आपकी E2 जो स्टेट है वो आपकी मेटास्टेबल स्टेट है. आप यहाँ पे अगर एटम बिल्ड करना शुरू कर दोगे, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटोन एमिट हुआ है वो वापस एब्जॉर्ब भी हो सकता है और E2 से आप वापस E3 में जा सकते हो. रिमेंबर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए E3 और E6 में. You cannot afford to have larger number of atoms in E3. E3 में आप larger number of atoms रखना afford नहीं कर सकते हो. So that is why E2 के atoms को you need to bring them back to the ground state. And that is where the narrow tube comes into the picture. Why this is a 4-level laser? I'll just take one more minute here.
4 level laser क्यों है ये? Count the number of levels involved. 1 level, 2 level, 3 level and 4 level. So that is why this is a 4 level laser. Helium neon laser is an example of a 4 level laser. I Ma'am, think I'll why we stop are here. not counted E4 and E5? 4 and 5 क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है लेजर में. आपका जो ट्रांजिशन हम कर रहे हैं कंसीडर रेड लाइट के लिए, वो सिर्फ आपका ये वाला ट्रांजिशन है 6328. Okay, ma'am. So that is why. Anyone else has any question? Ma'am, what will happen to the photon emitted due to spontaneous emission? स्पॉन्टेनियस एमिशन, आप जो एक कैविटी चूज करते हो ना, ये जो ट्यूब चूज करते हो, ये आप इस वे में चूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इवन ये वाले जो फोटोन्स हैं, ये भी कि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो फोटोन्स हैं उन्हीं को ऑसिलेट कराए फोर्थ एंड बैक, बाकी फोटोन्स को वो एब्जॉर्ब कर जाए. So this is what would happen to the spontaneous emitted photons here also. They might be absorbed, but another possibility is that वो वापस रिफ्लेक्ट होके भी आ सकते हैं. और अगर वो वापस रिफ्लेक्ट होके आ गए तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी आपको वापस यहाँ से यहाँ जाने के लिए चाहिए है. और वो आप एकदम नहीं चाहेंगे कि वैसा हो, क्योंकि E3 में आप ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको E6 में ज्यादा चाहिए है एज कंपेयर टू E3. Did I answer your question? Was that your question? Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है? क्विक क्वेश्चन? No. And sorry for taking the extra class, extra time. I just didn't want to do this same diagram tomorrow again. So I'll stop here. Please go through the PPT that also has been uploaded on LMS for this. And if you have any doubts about this helium neon laser, we can start with those doubts in tomorrow's class.